Good morning. As promised earlier, I am going to talk about the communication and how healthy and effective it should be and how it can be made that effective communication. जहाँ तक कम्युनिकेशन का सवाल है, पिछली बार मैंने पूरी विस्तार से बताया था, मगर आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो कम्युनिकेशन हेल्दी कैसी बनाई जाए, उसके लिए क्या किया जाए. I believe that there are three things which are very important for making your communication very effective, very productive, and very healthy. Number one, you must have a very good command over the language, which is not only the physical one but also the body language. Because if the body language is not going to be in synchronization with what you speak, then surely it is not going to make an impact. Your body always tells you what basically you feel, what you think, and when you communicate, if eyes are making contact with the people, and that eye contact will give the idea of your confidence. So your body language is very, very important, and if body language is not going to be proper, then surely the communication will not be proper. एक तो ये है. दूसरा, आपके बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पैर हिलाएं. बॉडी लैंग्वेज का मतलब है आप कितने कॉन्फिडेंट दिखते हैं, आप आंखों में आंखें डालकर बात कैसे कर पाते हैं, और आपकी वाणी में किस तरह का वजन है और किस तरह से ये आप लोगों तक पहुंचती है. But as far as I understand, this body language is very, very important. Whenever you are going to be there in the public meeting and people listen to you, most of the times they watch your body language. If there is not going to be any adrenaline rush of blood, it will be quite reflected in your body language. So it is important that you must have a very strong body language, where you not only make the contact with the people, but at the same time, you make sure that you are going to emit a confident look. अब रहा सवाल दूसरा. ये जो आपका दूसरा पॉइंट होता है आप बॉडी इस कम्युनिकेशन के लिए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप कैसे एक ब्रॉड स्माइल ऑन द फेस रखें और उसके साथ आप बात करें कंटेंट के साथ. और जब आप स्माइलिंग फेस के साथ लोगों तक पहुंच जाते हैं, कंटेंट आपका बहुत अच्छा होता है, तो लोग आपको हमेशा आपकी ओर अट्रैक्ट हो ही जाते हैं. But generally I have seen that people just do not have the proper content. Your content must be strong and it must touch the hearts of the people. और अगर वो कंटेंट आपके पास है तो आप इजीली किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज पोस्चरिंग. आपकी पोस्चरिंग कैसी है, आपका पोस्चर कैसा है, आप कैसे बैठते हैं, खड़ा होते हैं, कैसे आप बॉडी का प्रयोग करते हैं, आप अपनी आंखों का कैसे प्रयोग करते हैं, और बोलते समय आप किधर और किन किन चीज़ों पर आपका ध्यान रहता है. कम्युनिकेशन का सिर्फ मतलब ये नहीं होता है कि आपने बातें बोलनी है. Communication also means that you have to make yourself acceptable to the people. You have to make sure that the people understand. You are in a position to convey your message, which basically touches them. And if the message is not going to be apt, then that communication is going to be of no use. So it is very important that you should have a very strong communication. And for that, as I said, the three things are very important. First is body language, second is smiling face, and third is posturing. Then it comes to the most important thing, and that is your grammatical part, whether in any, whatever the language may be, must be always correct. You should sound very correct as far as the grammar is concerned. And when you talk, there should be sense, there should be meaning. It should not anywhere be the language itself should attract the people. There should be sweetness in the language. There should not be any kind of border dash. When you talk about the language, it must be meaningful, it must be relevant, and at the same time, it must be precise and concise. And if you are going to speak with clear ideas, you are surely going to reach out to people, and people will always love to listen to you. And in case you do not know how to talk to the point, you are not going to be talking business, you just go wayward and go on beating about the bush, then people will never take you seriously. इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब कम्युनिकेशन करनी हो, पहले ये जान लो आपको बोलना क्या है, फिर ये जान लो आपको बोलना कैसे है,
और लास्ट में ये जान लो किस तरह से बोलना है। जब आप इन तीनों बातों को समझोगे तो आई एम श्योर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी तरह से मानी रिसीव की जाएगी और लोग आपके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे और भविष्य में आपको और ज़्यादा मौके मिल दिए जाएंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। थैंक यू।